Hello everyone, welcome to Pitambara Educators. In this video, we are going to discuss MCQs for class 11th IT students for the unit Office Automation Tool. Yes, this unit is in the syllabus of term 1. So, we are going to discuss the MCQs for this unit. So, let's begin. Which of the following is an example of mixed referencing? Referencing means cell reference in calc. तो जो सेल एड्रेस होता है उसे हम सेल रेफरेंस भी बोलते हैं. एंड नाउ देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंस विच वी हैव स्टडीड. वन इज रिलेटिव, देन एब्सल्यूट, देन मिक्स्ड. सो व्हाट इज रिलेटिव? जब हम सिंपल कॉलम नेम एंड देन फॉलोड बाय रो नंबर लिखते हैं, देन इट इज रिलेटिव रेफरेंसिंग. व्हेन वी राइट dollar sign in front of column as well as in before this row number, then it is absolute referencing. So this is an example of absolute referencing. And when we write dollar sign either before this column name or before row number, then it is मिक्स्ड रेफरेंसिंग. इट मीन्स कि या तो हम सिर्फ रो के आगे लिखते हैं या कॉलम के आगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर $3 लिखा होता, then also it would be mixed referencing. So here option A is the correct option. Now let's see the second question. Reema needs to calculate marks in all 5 subjects. So let's say the marks are written in B1 cell, B2, B3, B4, B5. Okay, B1 to B5, marks of all the 5 subjects are written. Which of the following option will help her get the total marks? So how we can calculate the total marks in cell B6? It will be, for writing B6, for getting the result in B6, we will start the formula equals to, this question is given actually in sample paper. CBSE ने जो class 11th IT के लिए sample paper release किया है, this question I have taken from there only. So this is also correct statement. B1 plus equals to B1 plus B2 plus B3 plus B4 plus B5. तो इससे क्या होगा, जो भी इन सेल्स में वैल्यू हैं वो सब ऐड हो जाएंगी. एंड अनदर मेथड इज यूजिंग सम फंक्शन. सो वी कैन यूज सम फंक्शन. सो इन दीज 3 स्टेटमेंट्स, तीनों में सम फंक्शन है. नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट लिखा है, अगर यहाँ पे सम इक्वल्स टू सम B1 कॉमा B5 लिखा है, सो व्हाट विल हैपन, वैल्यू ऑफ B1 एंड B5 विल बी टेकन टू कैलकुलेट द सम. तो इसमें B2, B3, B4 इंक्लूड नहीं होंगे. Now B1 colon B5, this means we have defined the range. It will take all the cells from B1 to B5. तो ये सही है, सेकेंड सही है एंड फोर्थ वन इज करेक्ट. सो हेयर ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन 3. Dash display slides on a page as seen when printed. We can say that which option out of these will display slides on a page as seen when printed. So its answer is handout page. View handout page, this is the correct option. Option D is the correct option. Now we will see question number 4. Dash is the main editing view for writing and creating slides. So if you want to edit the slide or create the slide, means we have to write something in the slide, then what happens, it is not allowed, or slide sorter view does not allow us to write something on the slide. So this is incorrect option. Now normal view, yes, so normal view is used for writing or editing the slides or creating the slides. So here option B is the correct option. Now next question number 5. Dash presents all the slides of the presentation in miniature form. Miniature means small icon form, small picture form. So in slide sorter view, all the slides are displayed in the small icon form. So here option A is the correct option. Now let's see question number 6. If you want to repeat the actions multiple times in a spreadsheet, यहाँ पे in होना चाहिए. So in a spreadsheet you need to record, you need to create a template, create a macro. C option is sort the data, filter the data. So if you have to repeat the actions, for example, I have to calculate the square of a number in cell B1. अब मुझे B5 में भी यही करना है, then B6 में भी यही करना है. So if I have to repeat the action, then macro is used. So here option B is the correct option. Next question number 7. Beena wants to see how the document will look
बिफोर प्रिंटिंग शी शुड यूज़। तो अगर हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले देखना है कि हाउ इट विल लुक लाइक आफ्टर प्रिंटिंग, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। सो फाइल मेन्यू में जाके वी चूज़ प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। सो हेयर ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत हो गया यहाँ पे, ऑप्शन सी एंड देन ऑप्शन डी। सो हेयर ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Now next is Beena wants to make printer setting before printing. Now for making setting of the printer, which option is the correct one? What we have to do for setting, for making the printer setting, we go to file menu and then we choose printer settings option. So here option B is the correct option. Again यहाँ पे ये copy paste हुआ है, so options are wrong. So here option B is the correct option. सो एक्चुअली इस यूनिट में आपके ये तीनों कवर हो गए, इम्प्रेस, कैल्क एंड राइटर, जो अपने आप में 10th में एक एक यूनिट थी। यहाँ पे इन तीनों को मिला के एक यूनिट बनाया है. सो मेनी क्वेश्चंस कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दिस यूनिट, क्योंकि इसमें हर एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन बन सकता है. तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन MCQs को पढ़ोगे और आपका हो जाएगा. इसके लिए आपको अच्छे से यूनिट में हर एक टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए कि इसको करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं. एक रो को सिलेक्ट करने के लिए या रैप टेक्स्ट करने के लिए, मैक्रो क्रिएट करने के लिए मैक्रो होता क्या है, इसके क्या स्टेप्स हैं, यू शुड नो, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है. सो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इसके प्रैक्टिकल करोगे तो आपको खुद से चीज़ें आने लगेंगी. सो आई विल सजेस्ट यू डू द प्रैक्टिकल एंड read the unit. Next is in a presentation sound clips can be inserted but not movie clips. So क्या ये true है? Sound clips can be inserted, it means audio can be inserted but not video. So this is wrong. Movie clip can be inserted but now not sound clips. This is also wrong. Both cannot be inserted, both can be inserted. So both can be inserted, this is the correct option. Because you know that we can insert audio as well as video in a presentation. Next is question number 10. Which option is used to break the text into multiple lines, that is adjusting the row height to fit the text within the cell. So cell means calc की बात हो रही है, calc में एक cell है. अगर हम उसमें कुछ text लिख रहे हैं, so you must have seen कि वो क्या होता है, वो out of the cell चले जाता है, next line में नहीं आता. If we press enter की तो हम next cell में आ जाता है हमारा cursor, but enter press करके इसी cell के second line नहीं form होती. तो for that what we have to do, we choose which option, break text, wrap text, break line, enter key. So correct option is wrap text. We know कि wrap text मतलब ही क्या होता है कि placing the text in multiple lines in a cell. Next question number 11. Which of the following is not a horizontal alignment? So horizontal alignment means like if you will see this text, it is center aligned. This one is left aligned. If my text will be shifted towards right side, then it will be right aligned. And another is justified. Horizontal का एक और होता है justified. So left, right, center and justified. So here this middle is written, which is not a horizontal alignment. This is wrong. Now question number 12. In calc sheet, grid lines are automatically printed while borders are not. So what are grid lines? These horizontal और vertical lines जिनसे cell या फिर table form होती है, these light grey lines जो कि table के form में sheet को create करती है, that is grid lines. तो जब हम print preview करते हैं तो ये जो grid lines होती है appear नहीं होती है. अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1, 2 and you will check its print preview, या आप इसका print निकालेंगे, then you will just see 1 and 2 are written, table form में नहीं आएगा. It means this table these grid lines will not be printed. And when I will apply border using border option, so these will be highlighted with dark black color or whatever color you choose for the border. And then what will happen, अगर आपने border apply किया है, then these content will be enclosed in the cell like this. So borders are automatically printed but grid lines are not. So you can see the options. Grid lines are not automatically printed while borders are. So this is the correct option. Question number 13. Which feature is used to make selected sentence to all capital letters?
सो लाइक दिस इज़ द सेंटेंस. अगर मुझे ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा अपर केस बनाना है, दिस इज़ कैपिटल. अगर मुझे इससे स्मॉल बनाना है, इट मीन्स लोअर केस लेटर बनाना है, देन व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज द केस. ऑप्शन सी, दैट इज चेंज केस. Now question number 14, special effects used to introduce slides in a presentation are called. It means I have to introduce second slide and my first slide will remove from the screen. So for introducing the slide there will be some effect. What that is effect is called? It is called transition. Now question number 15, what is a slide animation? So it is a pattern that applies to elements of a single slide. Yes, this is correct statement. That what is slide animation? It is used to apply effect on the elements of a single slide. For example, this text is a element of a slide, then another text box, that will be the another element. If there is a picture, then that picture will be an element. So we will apply animation, we will apply effect on these single elements. Next is it allows making changes in appearance of the slides, applying changes to all the slides in the presentation. So अगर हमें सारी slides की appearance एक साथ change करनी है, then we should use slide master. So this is the definition of slide master. You should know then slide master also, कि slide master भी ऐसे पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में, what is a slide master in a presentation. So you should know that this is the definition of slide master. It is the pattern that applies when a slide goes from one to the next, and this is the definition of transition. So you should know that what is transition. It is pattern that applies when slide goes from one to next. एक के बाद एक slide जब आती है तो जो भी effect होता है, that is called transition. Next, question number 16, dash chart is used to compare values across categories by using vertical bars. So which chart is used for comparing the values in the form of vertical bars? These are vertical bars. तो ऐसा chart कौन सा होता है? Column chart. So option B is the correct option. Now question number 17, dash chart is used to compare trends and changes in values over time. So for example, आपको देखना है कि 2001 से लेके 2005 तक population में कितना change आया है. So which type of chart will be used? Line chart. Now question number 18, dash chart is used to display relationship between variables. For this we use scatter chart. For example, there are two variables x and y. For example, x is represent speed and y represent time. तो किस टाइम में कितनी स्पीड है, we will show it using these points. So these are, this is scatter chart. Now next is, which of the following is not a type of filter in calc? So in calc there are three types of filter: auto filter, standard filter and advanced filter. So mixed filter is not a type of filter, so here option D is the correct option. Now question number 20, which filter is used to provide more options for filtering, such as combining multiple filters by using and or operator? तो अगर हमें एक से ज़्यादा filter यूज़ करने हैं in a table, देन व्हाट वी शुड डू. फॉर एग्जांपल, अगर हमें ऐसे स्टूडेंट के मार्क्स देखने हैं जिसका जेंडर जो है एफ है, फीमेल है, एंड मार्क्स जो हैं वो 75 से ज़्यादा हैं, देन देर आर टू फिल्टर्स और हमें ये दोनों फिल्टर्स अप्लाई करने एट द सेम टाइम, देन वी शुड यूज़ स्टैंडर्ड फिल्टर. सो दिस मच इन दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको इस यूनिट की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी. If you find this video helpful for the preparation of your term 1 exam, please like and share this video, and please comment box में comment करके बताइएगा whether you like this video, whether this video was helpful in the preparation of the exam or not, and stay tuned. Thank you for watching this video and all the best for your examination.